engineers. Welcome to part 6 of our free online class of Still plus 2 Podium plus Service Level plus Typical Floors. I have mentioned my WhatsApp number. If you have any doubts related to the content or you required any course material, you can WhatsApp me on the number shown on your screen. So to begin with our video, in this video, we are going to see how we can quickly model the slab and what are the types of slabs available in ETABS and what is the right way to model the slab so to avoid the analysis and modeling error in our model, and we will try to replicate these floors. Okay, so before modeling the slabs, we need to define the slab in our ETABS. So how to define that is हमको यहाँ पे डिफाइन में जाना है. डिफाइन में जाने के बाद में वी हैव सेक्शन प्रॉपर्टीज. इन सेक्शन प्रॉपर्टीज वी हैव स्लैब सेक्शन. स्लैब सेक्शन में आके द रिक्वायर्ड सेक्शन विच वी हैव सीन in our concept that what are the required size. हमको mostly 125, 175 and in some toilet areas we are getting as 115 mm thick slab. So accordingly we have to define in our ETABS what are the sizes and what are the directions of the is it two-way or one-way slab. उसके according हमको यहाँ पे define करना पड़ेगा. Now I will show you how to define this slab in our ETABS. हमको यहाँ पे आना है add new properties. Add new properties में suppose I am defining 125 mm thick slab. So how can I notify this? इसके लिए हमको क्या करना है? S denotes for slab 125 thick and the grade of concrete. We are using M30 in our project, so I will be mentioning M30 grade. Now the slab material हमारे पास यहाँ पे M30 है. Okay. Now modeling type में we have four types of materials available with us. We have shell thin, shell thick, membrane and layered. All these four, the detail about all these four has been mentioned in next part. So you have to watch that part for detailed explanation. In this video, we will see, we will define only shell thin and membrane. So first I will select the shell thin. उसमें अभी आपको क्या करना है? Type में आके slab select करना है. Only have to consider the slab. Drop strip we will not consider. We only consider the slab. Thickness would be as per our requirement. Suppose in this हमको requirement है 125 का, so I will mention 125. Okay. Now I have to मुझे वापस define करना है 175 का slab. तो मैं यहाँ पे जाऊंगा add new properties. Add new properties करने का भी जरूरत नहीं है. We can just select this slab and we can go add a copy of property. Add copy of properties करने के बाद में प्रॉपर्टीज का नाम फॉर एग्जांपल मुझे 175 डालना है, तो S 175 and M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट. नाउ इसको डिफाइन करने का इंपॉर्टेंस ये है कि अगर इफ यू वांट टू रेक्टिफाई आवर स्लैब कि हमने बराबर अपने पोजीशन पे उसको लगाया है कि नहीं लगाया, रिक्वायर्ड डिजायर्ड थिकनेस उसको मॉडल किया है कि नहीं लगाया. इफ अगर हमने पूरा डिटेल में उसको नेमिंग किया रहेगा तो इट इज इजी फॉर अस टू क्रॉस चेक एट द टाइम ऑफ क्रॉस चेकिंग. ठीक है, तो मैं यहाँ पे नेमिंग करना रिकमेंडेड. मॉडलिंग टाइप अगेन विल कंसिडर शेल थिन. type is slab and thickness is 175. Okay, now majorly what we generally use in our slab modeling in ETABS, we have shell thin and membrane slab. The detailed explanation is explained in the further videos. Now for time being we can consider the shell thin and shell membrane definitions. Okay. Okay, so now we will see how to model the membrane slab. Similarly, you have to go add a copy of property. Now for membrane, I used to denote as M125, M30. Now, modeling type में we have to rechange to membrane. Okay. Now the slab thickness should be as per the requirement 125. In membrane, we have two options. One-way distribution and two-way distribution. Suppose I have one-way slab of 125, so I have to check in this use special one-way load distribution. Okay. Now, suppose I have 125 two-way slab, so I will just go add a copy of property. I will just rename this as M125 M30 two-way. The only change I have to do in this is
uncheck this box and have to apply OK. Now we will see how can we model these slabs in our ETABS so that the errors are very minimal or neglected. Now we have lots of option available here. We have to go draw floor areas. हमारे पास यहाँ पे option है draw rectangular floor. We have the option also quick draw floors. Now we generally practice by taking this because it seems to be more accurate than the other two. So I will just show you how we can model our slab by clicking this option draw floor plan elevate. ठीक है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे. प्रॉपर्टीज में डिजायर्ड प्रॉपर्टीज हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल आई वुड बी मॉडलिंग मेम्ब्रेन टू वे, तो M125 M32 वे को हमको सिलेक्ट करना है. यहाँ पे एंगल, ठीक है. उसके बाद में यू हैव टू सिलेक्ट ईच एंड एवरी जॉइंट्स इन द विच आर कमिंग इनटू द पॉइंट्स. हर एक जॉइंट्स को हमको सिलेक्ट करना है. ओके, सिलेक्ट करने के बाद में वी कैन से राइट क्लिक एंड वी कैन, जैसे हम इसको राइट क्लिक करेंगे तो आवर स्लैब इज मॉडल. सिमिलरली फॉर अनदर वे वी कैन डू इट सिमिलरली. As of now, for the ease in modeling, I am modeling every slab as 125. I will show you the shortcut how we can change the properties after modeling it. So first we will see how can we model very quickly. Completed the entire model with slab. To avoid the repetitive work and save time, I have paused that particular video because the procedure for modeling the slab is same as I have shown earlier. ओके, नाउ द इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें हमको क्या देखना है कि जो हमने स्लैब असाइन किया है वो स्ट्रक्चरल लेआउट से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है. इफ इट इज नॉट मैचिंग देन हमको उसको अपडेट करना पड़ेगा बिकॉज स्लैब मॉडलिंग इज अ पार्ट. उसको चेक करना है कि हमने जो स्पेसिफाइड थिकनेस स्ट्रक्चरल लेआउट में स्ट्रक्चरल जो फ्रेमिंग में हमने डाला है वो हमने ईटैब्स में वो भी एक्चुअल मॉडल किया है कि नहीं वो हमें देखना है. So we have some shortcuts over here on my screen. You can see that I have the shortcut assign slab section, assign deck section. So अगर ये आपके shortcuts नहीं दिख रहे तो आपको क्या करना है, ऑप्शन में जाना है, कस्टमाइज टूल बार में जाके ये सारे को चेकिंग करना है. अगर जैसे आप इसको क्लिक कर दोगे ना तो ये आपको ऑप्शन शॉर्टकट ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख जाएंगे. नाउ हाउ आई चेक दैट हमने जो असाइन किया है वो प्रॉपर असाइन किया है कि नहीं. इसलिए फर्स्ट ऑप्शन है असाइन स्लैब सेक्शन में जाके हमको इसको अप्लाई कर रहे हैं. जैसे हम इसको अप्लाई करेंगे ना तो यहाँ पे हमको स्लैब सेक्शन जो हमने डिफाइन किया है वो हमको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा. नाउ फॉर एग्जांपल दिस स्लैब आई रिक्वायर्ड इज S175. तो यहाँ पे मैं स्टेयरकेस में आके S175 कर दूंगा इसको. नाउ द डायरेक्शन ऑफ स्टेयरकेस वुड बी इन वाई डायरेक्शन बट हमारा यहाँ पे एरो एक्स डायरेक्शन में दिखा रहा है. तो हमको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, असाइन में जाना है, असाइन शेल. वी हैव local axis. In local axis, I have to just rotate this to 90 डिग्री. जैसे हम इसको रोटेट करेंगे तो स्लैब हमारा जो है ना वो रोटेट हो जाएगा 90 डिग्री में. ओके, नाउ सपोज दिस स्लैब and this slab I required 175 thick as per my
this 5 slab I required 175. So what I will do simply is I will select this 5 slab. I will just go assign 175 and then apply. Now अगर ये भी आपको थोड़ा डिफिकल्ट पड़ रहा है तो we can go in the display. You have to press shortcut Control W. Now objects पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सेक्शन पे आना है. जैसे आप सेक्शन पे आओगे ना, you will see the different color of slab with हर जगह पे आपको डिफरेंट कलर दिखेगा. तो ये एक्चुअली दिस स्लैब का प्रॉपर्टी है और उसके साथ पे यहाँ पे कलर भी डिफाइन होता है. तो इट इज इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हमने यहाँ पे क्या स्लैब मॉडल किया. सपोज दिस स्लैब आई रिक्वायर्ड say one this slab I also I required as 175. So अगर यहाँ पे मेरे को 125 दिख रहा है, इट इज इजीली हम उसको देख सकते हैं कि 125 दिख रहा है. नाउ इसको अगर मुझे 175 शिफ्ट करना है तो जस्ट सिलेक्ट एंड गो टू अप्लाई. अप्लाई करने के बाद में ये भी 175 हो जाएगा. सो इट इज वे मोर इजी टू आइडेंटिफाई कि हमने कौन सा स्लैब यहाँ पे असाइन किया है. नाउ ये कलर कहाँ दिखेगा आपको जब आप डिफाइन करोगे सेक्शन प्रॉपर्टी स्लैब सेक्शन. नाउ जैसे हम इसको मॉडिफाई करेंगे ना, वी कैन सी डिस्प्ले कलर. जो हमारा कलर है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा. say for M125 M30 for one way slab the color is showing to be red. Now we will see कि red color दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है. Suppose this slab I required as M125 one way. जैसे मैंने इसको किया तो it is color, its color has been changed to red. So it is easy for us to identify कि हमारा 125 one way slab किधर है. All the red colors in the model layout indicate 125 one way distribution. Okay, and all the blue color indicate as 175 slab with 175 degree. Okay, so it is this easy. How can we identify the locations for yes. So that's it for this video. For the next video, we will see the all the 4 layers of slabs which are mentioned in ETABS. What are the significance and what are the uses? Then as we proceed, we will complete this ETABS model entirely. Thanks for watching our YouTube channel. If you have any doubt, you can WhatsApp me.